Hi everyone, welcome to my channel. So this is the third part of the CPET Physics 2022 answers. Okay, so I will start from the quantum mechanics, that means the modern physics. The solution starts from question number 15, and the question number 15 is given by: find the eigenvalue of an operator q cap, this equals to I d by dx for the wave function or the eigenstate given by psi equals to 1 upon root 2 e to the power ix. Okay, तो पिला माने this is the simple question. मु एठी आपन को solution देखै दोछि. So in this question, what are the given? That is, we have to write the characteristic equation, that is q psi. Q cap is the operator, and psi, this equals to lambda psi. Lambda is called, this is called the eigenvalue. Okay, eigenvalue. So according to the question, the given psi equals to 1 by root 2 e to the power ix. The operator is given I d by dx. So when we operate this operator with the eigenstate psi, we will find that is I d upon dx of 1 by root 2 e to the power ix. This would be equals to, so it I automatically I 1 upon root 2 it common term asla. The derivative of e to the power ix, that is equals to I e to the power ix, and I into I, this equals to minus 1 by root 2 e to the power ix. So it can be written as minus I. Okay, that means the operator q cap into psi, this equals to minus 1 into psi. Okay, that is equals to minus 1 into psi. That means here from this equation we get the eigenvalue, that is equals to minus 1. So answer will be the minus 1. In this question, the option number D, that will be the correct answer. Next come to question number 16. It is given by, in van der Waals gas equation, P plus A upon V square, this equals to P upon P plus A upon V square into V minus P, this equals to RT. This is called the van der Waals gas equation. What does the term A by V square represents here? Okay, तो पहले मान बोली तो एठी आंसर रे केबे मेन वेलोसिटी होबनी, effective area भी होबनी, the volume occupied by gas molecules also होबनी. The answer will be attractive force between the molecules. Okay, मु आपन को रीजन कहि दोछि एक्चुअली कोन होछि एठी. So एठी पिला मन देखो, for example consider a molecule. Okay, तो पिला माने गोटे बॉक्स कंसीडर करो. Okay, so where there are a number of gas molecules. Okay, suppose this is the gas molecule. So actually this gas molecule is attracted by every other gas molecules in every direction, in all directions. That means the net force of attraction upon this particle is equals to 0. Okay, this is equals to 0. Now suppose the molecule is tends to collide towards the wall of the vessel. Okay, तो suppose molecule wall को आसी collide करिया try करछ, तो एठी मध्ये पिला माने कोन हबो, due to other molecules it will experience some force of attraction also. But ए केसेस रे पिला माने देखो, जदि बॉडी ऊपर किछि अदर फोर्सेस एक्ट नोइ थांता, ताहले बॉडी जेते बेले कोलाइड करथंदा वॉल को, एठी मोमेंटम एंड वेलोसिटी रो वैल्यू जा हिथांदा. ओके, बट इन दिस सिचुएशन एठी बॉडी ऊपर अदर फोर्सेस भी बढ़ुची, तो ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ये मॉलिक्यूल रो वेलोसिटी एंड हेंस मोमेंटम ड्यूरिंग द कोलिजन टू द वॉल will sure decrease down. That means the velocity as well as momentum during the collision due to the presence of a van der Waals force of attraction due to other molecules will be reduced. Okay, that means here the pressure term reduces. Okay, sorry, momentum term reduces. Momentum term reduces, that means obviously the pressure term also reduce. That means the original pressure, that is P, this is reduced by a factor, that is A by V square. Okay, तो आमे पिला माने ये रिडक्शन को आमे काउंट कर नथले, तो ड्यू टू एठी जेतोले रिडक्शन को काउंट करियो, एठी गोटे टर्म ऐड होचे, दैट इज A upon V square. तो एठी पिला माने इंपोर्टेंट फैक्टर की रहला रे ना, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द वेलोसिटी एज वेल एज मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल डिक्रीजेस. दैट्स व्हाई A upon V square represents the effective force between the molecules. So in this question the answer will be option number D. Okay, now come to the question number 17. This is given by the operator of form of x plus px whole square
ओके तो एक्चुअली आपको आम जस्ट डेरिवेशन करा पड़े मुझे आपको बर्तमान सॉल्यूशन आर प्रोवाइड कर दूसरी सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 ओके तो पे देखो ये when we solve this question x plus px whole square आपको मुझे प्लान ओपन कर देली दैट इज इक्वल टू x plus px इंटू x plus px अच्छी गोटे आइगन ऑपरेटर आइगन वैल्यू मुझे मल्टीप्लाई कली दैट इज साई ओके नाउ जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो ओके मल्टीप्लाई करो सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स इंटू पी एक्स आई एगेन द भैल्यू ये मुझे प्लॉट कली मोमेंटम भैल्यू इक्वल्स टू माइनस आई एच क्रॉस डेल अपन डेल एक्स ओके ये मुझे जस्ट खाली भैल्यू पुट कली नेक्स्ट स्टेप रे कौन कली साई ऐड कली एक्स स्क्वायर साई प्लस एक्स माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल एक्स देन माइनस आई क्रॉस डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स ये पिला मैंने अच्छे साई एक्स साई डेरिवेटिव हम माइनस एगेन आर होल स्क्वायर फाइंड आउट करी एंड दिस गिव्स माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ साई एगेन ऑपरेट कर पिला मैंने दिस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साई सेमती रहिबो माइनस ये आग लिखिदेली माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाय डेल एक्स ये जस्ट खाली अरेंजमेंट कली आपण मैंने देखिपे एगेन इन दिस लास्ट टर्म ओके एक्स स्क्वायर साई ये जस्ट पे मैंने अरेंज करदेली कौन ना माइनस आई एच एक्स डेल साई बाय डेल एक्स ये भी अच्छी माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाय डे एक्स दिस इक्वल्स टू माइनस टू आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाय डेल एक्स again this term minus I h psi and del x by del x equals to 1 this is equals to minus I h cross psi and the last term is given here ये पिला मैंने मुझे जस्ट कॉमन कर देली ओवरऑल psi ये कॉमन कला पर दिस विल बी द आंसर तो क्वेश्चन सेटर आंसर को वेरीफाई करो ऑप्शन नंबर सी okay option number C will be the answer of this question. Now come to the next question. So 20 gram of ice where latent heat is 80 calorie per gram at 0 degree Celsius is converted into ice into water at same temperature. Okay, so the change in entropy will be तो पे मैंने बहुत इजी क्वेश्चन थिला ये क्वेश्चन पचार देख पे मैंने सो आम पाखे गोटे किसी आइस थिला आइस रो मास m इक्वल्स टू 20 ग्राम ओके तो whenever the ice melts down to water ओके तो आइस ये पे मैंने कौन है वाटर को कन्वर्सन है तो एट 0 डिग्री सेल्सियस तो पे रही था एट 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स ये हमें यूज कर लैटेंट हीट application okay that means at we know the at latent heat what is latent heat so this is the hidden heat at which the phase transition occurs okay that means ice melt to water at 0 degree celsius that means there involve the latent heat L okay again so Q what is the amount of heat released here that means Q equals to ml so that ice gains that quantity of heat so entropy what is the formula of entropy equals to Q upon the change in temperature that is T okay so Q formula this equals to ml divided by the temperature that is T again put the values here what is the value of m is equal 20 multiply what is the latent heat it is given 80 divided by the temperature 0 degree celsius that means 273 Kelvin okay after putting all this value we will get the answer so the answer of this question will be option number A okay 5.86 calorie per Kelvin this will be the answer. Now come to the question number 19 the work function of a certain particle in the region 0 to L is given by psi equals to A sin x okay so what will be the normalization constant actually पे मैंने क्वेश्चन टे रंग अच्छे आपण मैंने जब अटेंड करते श्योर आप गेस मार्क मिले क्वेश्चन कौन रंग अच्छे सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर 1D बॉक्स ओके पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स बट ये वेव फंक्शन आई थिंक ये किसी पे मैंने करेक्शन दरकार दैट इज साइन इक्वल्स टू ए साई इक्वल्स टू ए साइन पाई एक्स बै एल है आई थिंक जदि पाई एक्स बै एल हुए देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी मैं आपको सॉल्यूशन देखिए दूसरी हाउ टू बी सॉल्व दिस द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द गिवन आई एम प्रोसीडिंग द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन ओके तो एक्चुअली मु क्वेश्चन अनुसार जहाँ भी क्वेश्चन देती अनुसार मुझे ट्राए कर कौन ये रंग है आप रेक्टिफाई इजिली करें तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन साई इक्वल्स टू ए साइन एक्स ओके this is normalized wave function that means this is the condition for normalization okay now after normalization constant put the value of psi that is psi equals to a sin x there psi star also a sin x multi square karo that means a square 0 to L
integration of 0 to L sin square x dx. Again, what is the value of sin square x? That is equals to 1 minus cos 2x by 2. Okay, next the value, put this value, that means a square 2 एटी पिला माने मोटे कॉमन नहीं गले, that is a square by 2. again integrate mu कर देली, तो integration of a dx that is x and integration of a cos 2x that is sin 2x by 2 and putting the limits that is 0 to L, this equals to 1. तो पिला माने देखो a square by 2, after putting these values I get L minus sin 2L by 2. तो actually question रे जदि पिला माने according to me, if the question रे sin pi x upon L था ताले एठी ऑलरेडी पिला माने देखो एठी आर वैल्यू sin पाई आस्ता. ओके, व्हाई? बिकॉज x बदल मु जदि एठी L पुट करबी, ओके, एठी केते था sin पाई L by L, सो पाई L by L कैंसिल होता, आंसर केते था पिला ने sin पाई. तो दिस टर्म जो sin पाई दिस इक्वल्स टू 0, तो एठी टर्म टोटली किसी रही न था. ओके, तो दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन a square by 2 into L minus 0, this equals to 1 नहीं था. that means a square equals to 2 by L and a equals to root over of 2 pi L नहीं था. बट क्वेश्चन रे समथि किछ नाही. आई थिंक क्वेश्चन आपन को गेस मार्क मिलियो सॉल्यूशन पे. ओके, तो नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन number 20. The question is given by light of wavelength 3500 Armstrong is incident on two metals A and B. Which metal will wield more photoelectrons if their work function are 5 electron volt and 2 electron volt respectively? तो देखो पिला माने सिंपल. तो suppose the phi 1 and phi 2, these are the work function of two metals. Okay, one is given 5 eV and the second one is given 2 electron volts. Okay, so कौन गिवन लाइट रो वेवलेंथ देछि, तो लाइट रो वेवलेंथ केते देछि 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग. अच्छा, तो पिला माने हम जाने व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वर्क फंक्शन फाई इक्वल्स टू कौन पिला माने h न्यू. ओके, एनर्जी ऑफ फोटन, दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू h c डिवाइडेड बाय लैम्डा. लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज. अच्छा, तो वैल्यू पुट करो पिला माने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एससी रो डायरेक्टली वैल्यू मत रही था पिला ने. द वैल्यू इज इक्वल्स टू 1240, ओके, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मल्टीप्लाई नैनोमीटर. ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स नैनोमीटर डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा गिवन हियर 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स 10 to the power minus 10 मीटर. ओके, सिंपली यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट दिस. ओके, तो कौन पिला माने आपको जो आम कैलकुलेट करिया, आंसर विल बी 124 डिवाइडेड बाय 35. ओके, अगेन सॉल्विंग दिस वैल्यू द आंसर विल बी 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देखो पिला माने, तो वर्क फंक्शन एक्चुअली केते दरकार 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो मते वर्क फंक्शन दरकार. आर मीनिंग when गोटे मेटल रो मिनिमम 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन थिले जाई से कोन करि पारे ना मेटल रो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करि पारियो. एठी देखो क्वेश्चन रे गोटे मेटल रो वर्क फंक्शन केते अछि 5 दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट ए मेटल रो वर्क फंक्शन अछि केते 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. दैट मीन्स दिस वर्क फंक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, but this material having work function 5 electron volt is sufficient to emit photo electrons because 5 is greater than 3.54. so here the metal number A will be will wield more photo electrons. Okay, the question number answer of this question will be option A. Next come to the question number 21. It is given by the de Broglie wavelength is equals to the Compton wavelength of a particle. Simple pila mane, what is the de Broglie wavelength? So here the de Broglie wavelength, this is equals to lambda equals to h upon mv, and the Compton wavelength lambda c, this equals to h by m naught multiply c, where v is the velocity of that particle and m naught is the rest mass of that particle and m is called the relativistic mass of the particle. As we know that m equals to m naught divided by root over of 1 minus v square by c square. So putting these two values in the above equation is given that lambda equals to lambda c. That means de Broglie wavelength is equals to the Compton wavelength.
So after putting this in equation, after equating both the equations, we get h divided by m equals to m naught v divided by root over of 1 minus v square by c square. Okay, so this equals to h upon m naught into c. So automatically h cancel over, एटी m naught भी m naught cancel over. Okay, so remaining portion पे लाने कौन रहेगा? Therefore we get this term, that is v by root over of 1 minus v square by c square. This equals to c. Okay, तो पे लाने बर्तन आपको solve करें कौन आसुचे? Okay, I am erasing this. So I am writing again, that is v divided by root over of 1 minus v square upon c square. This equals to c. Okay, again v by c. Okay, this equals to root over of 1 minus v square divided by c square. Squaring both sides, we will get v square divided by c square. This equals to 1 minus v square divided by c square. Okay, taking this in left side, I get 2v square by c square. This equals to 1. Okay, that means v square, this equals to c square by 2, and v equals to root over of c by 2. This equals to, sorry, not root over c by 2, this equals to c upon root 2. So according to this question, option number C will be the correct answer. Next come to the question number 22. This is given by the condition of the particle equilibrium. तो पिला माने देखो एठी गोटे important phenomenon मन रही था. एठी कौन पचारछि? Equilibrium of the particle. Okay, so there are three kind of equilibrium. First equilibrium is if P1 equals to P2. That means एठी पिला माने देखो गोटे separation है. Okay, there are two chambers. Here the gas number 1 and here the gas number 2. These are separated by semi-permeable membrane. Okay, तो ये पार्टिकल बा गैस नंबर पार्टिकल नंबर सॉरी द चैम्बर नंबर 1 टू चैम्बर नंबर 2 को जो पार्टिकल किसी इधर पार्टिकल किसी जापे कि टेम्परेचर मिक्सिंग हो ओके ये टाइप आम किसी कंडीशन चेक करिया. तो देखो पे फॉर दिस चैम्बर्स इफ प्रेशर 1 ऑफ द पार्टिकल P1 इज इक्वल्स टू P2, दिस इक्वल द मैकेनिकल इक्विवेलेंट. मन तो दिस इज कॉल्ड द मैकेनिकल इक्विवेलेंट. Now if temperature of the both the chambers is equals, that means if T1 equals to T2, we call it thermal equilibrium. Okay, again if the particles, that is mu1 equals to mu2, this is called the chemical potential. Okay, this is called the chemical potential. If chemical potential is equals, then we call this is a particle equilibrium. So according to this question, particle equilibrium, that means equality in the chemical potentials. Okay, so option number C will be the answer. Next come to the question number 23. 23 also बहुत easy पिला माने कौन? Given by two capacitors of capacitance 3 microfarad and 6 microfarad are arranged in series. तो पिला माने देखो फर्स्ट आमे सीरीज कनेक्शन करिया. सीरीज कनेक्शन पे कौन आसियो ना CS रो फॉर्मूला C1 C2 divided by C1 plus C2. Okay, what is the value of C1? That is 3 multiply C2 6 divided by 3 plus 6. The answer will be the answer will be 18 divided by 9 microfarads. Okay, and therefore what is the value of CS? That is 2 microfarads. Now this this arrangement is connected in parallel with a third capacitor C3. That means there is another capacitor C3 that is equals to 4 microfarad, and this is connected with this CS in parallel. That means we find out what is the parallel combination, effective parallel combination capacitance. So CP equals to CS plus C3. So this equals to 2 plus 4 microfarads. So net effective capacitance is 6 mu farad. Okay, now given that the arrangement is connected with a voltage that is 6 volt, calculate the energy stored in the capacitor. So what is the energy stored in the capacitor pila mane formula? So capacitor energy store formula W equals to half C V square. So this equals to half into what is the effective capacitance, that is 6 microfarad 10 to the power minus 6. Okay, multiply what is the value of V? V equals to 6, that means 6 square will be 36. Okay,
So पिलामान आको जो सॉल्व करिवो आंसर विल बी 1.08 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 4 joule. So option number D will be the answer. Clear? Now come to the question number 24. It is given by in which type of process the change in entropy is 0. Actually पिलामान एटी option किसी wrong अछि. I think this is not isotropic. Okay, this is called isentropic. That means if entropy, okay, in a phase change, if entropy change of entropy is 0, that means the entropy remains constant. Okay, so if the entropy is constant, that means change in entropy delta S equals to 0, the process is called isentropic, not isotropic. Okay, so option number A will be correct, but this would be isentropic. Now come to the question number 25. This is given by the electric field at a distance 0.05 meter from a sheet of charge distribution of surface charge density is given by this one. Okay, तो पिला देखो ये हमको कौन कौन देइछि. First thing, एटी गोटे charge distribution. Okay, गोटे normal plane sheet of charge अछि. So for this sigma given, that is 2 into 10 to the power minus 8. Okay, minus 8. What is will be the electric field? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला कौन पिला थिला ना सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट. So this equals to sigma equals to how much? 2 into 10 to the power minus 8 divided by 2 multiply what is the formula of epsilon naught? 8.85 into 10 to the power minus 12. Sorry, this equals to minus 12. Okay, after solving this we will get the answer, and the answer will be 0.11 into 10 to the power 4 volt per meter. So option number A will be the correct answer. Okay, so now come to the question number 26. It is given by the number of ways in which n identical bosons, and this is given by the number of ways in which n identical bosons can be distributed in two energy level. तो पहला मैंने देखो number of ways for the bosons, एटी फॉर्मूला मन रहता है W equals to ni plus gi minus 1 रो factorial, okay, divided by ni factorial multiply gi minus 1 रो factorial. Okay, so according to this question, number of way in which n identical bosons, so the number of bosons, that is n two energy levels, that is what is the g equals to 2. So according to एटी फॉर्मूला पिला मैंने पुट करो w रो वैल्यू केता आसीयो. So n plus 2 minus 1 रो factorial divided by n factorial multiply 2 minus 1 रो factorial. Okay, so this will be n plus 1 factorial divided by n factorial. So n plus 1 factorial can be written as n plus 1, okay, multiply n factorial divided by n factorial. So n factorial cancels out, and the answer will be n plus 1. Okay, so here the answer option number A will be the correct. Now come to the question number 27. Which one of the following is a fermion? Obviously option number D will be the correct answer, that is electrons are the fermion particles. Okay, now come to the question number 28. In quantum statistics the particles are what? एटी आंसर कौन हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल. जेहेतु दिस इज द क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम रे पार्टिकल मान को आम इजिली डिस्टिंग्विश कर पारिबा नै. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 29. एन अल्फा पार्टिकल इज सेम एज ए दिस इज ए हीलियम न्यूक्लियस, दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल इज रिटन एज हीलियम 24. Question number 30. Nuclei having the same number of neutrons but a different mass number, and neutron number same, that means this is called the isotone. Option number C will be the correct answer. So in the next part we will discuss the remaining questions. Okay, so if there is any wrong, please comment down in the box. Thank you.